रोटेशन विजिबल हो रहा है ना? So at present we are working on rotation. So we are rotating an object by particular angle, by particular a particular angle theta from origin. जैसे हमारा ये x और y है, हम पहले हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो हमारा होगा P, और जो इसका हमारा एक एंगल, सपोज ये एंगल हमारा है, दिस एंगल इज फाई, वी आर कंसिडरिंग पी के जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, यानी यहाँ पर एक्स हो जाएगा और ये डायरेक्शन अपना वाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ होने वाला है, इसको हम बोले पी डैश, ये डिस्टेंस हमारी आर होती है, इसको हम बोलते हैं आर डैश। तो हमारे जो न्यू कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका जो पी डैश हो जाएगा पी डैश, इसके जो न्यू कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसको कह सकते हैं एक्स डैश और वाई डैश। ओके, यहाँ से इसका जो एंगल होगा, दिस एंगल इज थीटा। वी आर रोटेटिंग दिस पॉइंट पी बाई एन एंगल थीटा। Direction we are considering here, this is the direction, and in mathematics we are considering anti-clock direction. This is anti-clock direction, anti-clock direction. This is also known as counter-clock direction. Counter-clock direction. Counterclock direction. This is also known as positive sense. Also known as, this is very important to qualify this question, this type of questions. This is also known as positive sense only, or positive sense direction. So while direction of rotation is not given, generally we are considering anti-clock direction. This is also known as counter-clock direction. Counterclockwise, also known as counterclockwise. Counterclockwise, anti-clock direction, positive sense direction, positive sense or positive sense direction, इन सभी का मतलब यहाँ पर सेम है, पॉजिटिव सेंस। जनरली वी आर टेकिंग इन मैथमेटिक्स काउंटर क्लॉक डायरेक्शन। ये क्लियर हो गया अच्छी तरह से? दीज आर द सिनोनिम्स फॉर काउंटर क्लॉक डायरेक्शन। अगर हमें दे रखा होगा, जनरली क्वेश्चन में दे रखा होगा काउंटर क्लॉक, नहीं दे रखा है देन वी विल कंसिडर दिस डायरेक्शन काउंटर क्लॉक डायरेक्शन। अगर दे रखा है तो हम अभी इसको नोट में इसको करेंगे वर्क कि क्या करना होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब अगर उसने इंडिकेशन कर लिया है। इनिशियली वी आर वर्किंग while rotating an object or line or a point or this vector p by an angle theta, then we will perform as follows. As we know that from trigonometry knowledge, this direction x is equals to r cos theta, and this is y, and this y equals to r sin theta. This is not theta, this is phi, so this is phi r sin phi. It is clear? Absolutely clear, because this is perpendicular, this is base, and base equals to x equals to r cos phi. Perpendicular, py h is r, so sin theta is p py h, so sin theta is y equals to h hypotenuse into sin phi. It is clear? Similarly, x dash and y dash we will obtain here. So here we are writing here
P dash is the new coordinate which is given by x dash and y dash. This new coordinate is new coordinate. This is coordinate. Here we are working rotation of matrix. मैट्रिक्स का रोटेशन हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और इनको आप लोग समझने की कोशिश करें. रोटेशन, दिस इज न्यू कोऑर्डिनेट. We are rotating anti-clockwise direction. We are rotating. We are rotating anti-clock CL एंटी क्लॉकवाइज. इसको हमने अभी डिस्कस किया था. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. न्यू कोऑर्डिनेट्स. नाउ वी विल, हाउ कैन वी फॉर्म दिस न्यू कोऑर्डिनेट्स. एक्स डेज जब तुम्हारा चला जाएगा यहाँ पर, सो एक्स डेज हमारा यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे. देयर फोर एक्स हमने आर को, सो एक्स डॉज इक्वल टू आर. आर तो हमारा सेम रहेगा. सो इसको हम आर, आर तो हमारा सेम ही रहेगा ना. दिस विल बी आर. आर हमारा सेम रहेगा ना, क्योंकि हमारा केवल हम उसको, इसको ही तो है, सिर्फ पॉइंट को ही तो मूव कर रहे हैं, खींचातानी नहीं कर रहे हैं ना. पॉइंट को ही तो मूव कर रहे हैं, इस पॉइंट को. हाँ, वो ओरिजिन हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन हमारा लिया हमने, उसको रोटेट कर रहे हैं ऐसे. रोटेशन, वी आर वर्किंग हियर रोटेशन, नॉट एनलार्जिंग. डायलेशन हम वर्क कर चुके हैं, वो हम डायलेशन में करते हैं इसको, फिगर को खींचातानी. ओके, डायलेशन में हम करते हैं, लेकिन वी आर वर्किंग ओनली रोटेशन. सो रोटेशन फिक्सिंग दिस पॉइंट and we are rotating this coordinate x and y in the direction, if not given, then anti-clock direction. So r will be same. Now x equals to r cos theta plus phi. After expanding by previous trigonometry knowledge, we will obtain here r cos theta cos phi minus sin theta sin phi. On multiplying this r cos theta cos phi minus r sin theta sin phi. As we know that cos theta cos phi. So we are taking here r cos phi in one bracket. This is cos theta minus r sin phi, because we know that from here that is sin theta. So this equals to x cos theta minus y sin theta. This equation number 1. Equation number 1 is clear. It is visible absolutely. Now we are taking it, this figure is clear. Okay, now similarly we will obtain here what is the value of y dash. This is x dash. Okay, so equation number 1. Now we are removing this one and we are working here rotation. Similarly y dash equals to, this is y dash equals to r sin theta plus phi. After our previous knowledge, we are expanding this r sin theta cos phi plus, so we are writing again r cos, so we are writing directly r cos phi. This is x
sine theta plus y cos theta. This equation is number 2. Now we are combining both the equations x and y. We are writing here generally x dash equals to x cos theta minus y sine theta. This was equation number 1, correct? Y dash equals to this equation x sine theta plus y cos theta. This equation number 2. You can write here equation according to your according to your choice, but you should follow a systematic choice while writing an answer in descriptive manner. Whether it is will be Roman letter equation number 1, equation number 2, and many more, or you can write this generally 1, equation number 2 generally, but you should not follow this is 1, this is number 2, this is third. This is wrong way. So you should follow a uniform way while writing the equations. Now matrix representation, these equations we can write in two-dimensional coordinate geometry. Matrix representation of these are given in matrix form x dash y dash. This is of two rows, one vector, one column is there, and matrix coefficient of x and y, we are taking this one x dash y dash because we are moving from x y to x dash y dash. We required x dash y dash, therefore x and y we are writing here these equation in the matrix form. Coefficient of this one, that is cos theta minus sine theta, cos theta minus sine theta, and this is sine theta and cos theta. This is the general, we can write x and y. This is generally x and y, because after matrix multiplication we will obtain these equations as such: x dash equals to cos theta x cos theta minus y sin theta. This is equation. So these are the same. So we are writing in this form. Now let us say this one as p dash equals to r p. P dash equals to r p. So r is simply rotation matrix. Here r is here, so we can write here. Here का मतलब होता है यहाँ पर और यहाँ. हिंदुस्तान में here को यहाँ जानते हैं. यहाँ r का मतलब हो गया rotation, r for rotation, rotation r o t a t i o n, rotation m का मतलब matrix. So this is matrix, rotation matrix given by r. We are denoting this one by r, and this is matrix while rotating by an angle theta. If direction is not given, then we will consider positive sense. Theta is positive sense direction. Positive sense direction. While we are rotating a matrix in positive sense direction, that is anti-clock direction. So you can note here that. Now you can note here, this is very important note, and this is technical. So we are removing some points from here, that let r theta be r2 to r2 be a linear transformation, be a linear transformation theta r2 to r2 be a linear transformation given by rotating vector through an angle, vector th through an angle
of theta. Then matrix E, then matrix E of r theta is given by is given by this matrix cos theta minus sin theta and cos theta. This is our work. Here we rotate a matrix in anti-clock direction. So this is the matrix we are obtaining in an anti-clock direction. Here you have to note another note. These notes are very important. टिप्पणी नंबर 2, नोट को बोलते हैं टिप्पणी. सो टिप्पणी नंबर 2, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू. इफ रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, if, so we are writing this one by another way. If rotation of matrix, if rotation of matrix in clockwise direction, then we simply take theta, replace theta by minus theta. So clockwise direction we are replacing theta by minus theta. Therefore this r theta gives us r minus theta. Therefore we are replacing in this matrix. So we will obtain here r theta is cos minus theta, and this is minus sin minus theta, and sin minus theta, and cos minus theta. By our previous knowledge, this is cos minus theta is again cos theta. This is minus sin theta minus minus, that is sin theta, and that is minus cos sin theta, and this is cos theta. And this is matrix while rotating in clockwise direction. It is useful note for you. ये आपके लिए काफ़ी अच्छा नोट है, और आप इसको रोटेशन मैट्रिक्स अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आप थीटा को माइनस थीटा बनाकर इस तरह से आप मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं. तो हमने एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हमने ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका यूज़ करके हमको करना है यहाँ पर. सो देयर आर सम क्वेश्चंस, वी आर वर्किंग ऑन क्वेश्चंस. एक एग्जांपल इसके ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना? ठीक रहेगा ना? उसके बाद एक थ्योरम करेंगे इस पर, थोड़ा सा काफ़ी वो भी अफेक्टिव थ्योरम है. पहले इस पर न्यूमेरिकल कर लें, जिससे कि आप लोगों को बोरियत नहीं होगी कि न्यूमेरिकल तो चल नहीं रहा, थीटा थीटा चल रहा है बहुत देर से, बहुत देर हो गया थीटा थीटा. सब बिगनर यहाँ पर थीटा से थोड़ा चिढ़ता है, क्योंकि उसको थीटा थीटा तो चल रहा है. तो यहाँ पर जब तक न्यूमेरिकल नहीं है तब तक उसका कंसंट्रेशन नहीं बनता है. सो दिस इज़ द वेरी यूजफुल क्वेश्चन, एंड वी आर टेकिंग 2 questions, and then we will take some theorems on the rotation of the matrix. So we are working rotation of the matrix, and triangle is given by coordinates n, not we are working n. A triangle is given by coordinates. इतना सा समझ में आ गया तेरे को? कोऑर्डिनेट्स 2,2, 8,2 and 5,5. Rotate this triangle. So question is that rotate this
triangle by an angle pi by 2, that is 90 degree. We are taking generally 90 degree. So here is it is the solution steps. We are taking here theta equals to 90 degree, and we know that r theta equals to cos of 90 degree. Rotation direction of rotation is not given, so we are taking anti-clock direction. Okay, cos 90 degree, that is minus sine 90 degree, and sine 90 degree initially, sine 90 degree, and this is cos 90 degree. So this matrix gives us 0 cos 90 0, you know, 1 and 0. In coordinate form 0 1 and minus 1 0 is given here. now now का मतलब होता है हिंदी में, अब a dash को हम कैसे रोटेट करेंगे? वी आर रोटेटिंग दिस वन मैट्रिक्स 0 minus 1 1 0 into given points are 2 2, so we are writing in 2 2 in this coordinate है. अभी हमने डिस्कस किया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था 2 2. So what is the multiplication? So this is gives us 0 1 minus 2 0 into 2, that is again इसको हम पूरा लिख लेते हैं थोड़ा सा. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा 2 by 2 एंड दिस इज 2 by 1. अगर ये और ये मैच करता है तो हमारी मैट्रिक्स यहाँ पर 2 by 1 की आ जाएगी, 2 रोज, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0 into 2 माइनस इसका माइनस 1 into 2 and 1 into 2 minus plus 0 into 2. So this gives us minus 2 and 2. This is our x and this is our y. So we can say this is our x dash or y dash. It is clear? X and y or x dash and y dash. Similarly we will obtain here y dash. So अब हम क्वेश्चन को रिमूव कर दें यहाँ से. हमारी मैट्रिक्स तो हमारे पास सारी अवेलेबल है. पॉइंट हमारा यहाँ पर हमने बी डैश बताया, जरा बी डैश हमारा आ जाएगा. सिमिलरली वी विल ऑब्टेन बी डैश 0 minus 1 और 1 0 and that is 8 and 2 and matrix multiplication that is minus 2 and 8, and this similarly c dash equals to we will obtain minus 5 comma 5. This is our x, this is y, this is x, this is y, or x dash y dash we can c dash. x ही रख लेते हैं हम यहाँ पर, इसको हम x और y कर देते. This is x and this y. So generally we are taking here a dash हमने कितना निकाला था? a dash हमारा जो आया था यही लिख लेते हैं. a dash equals to minus 2 and 2. now यहाँ पर now का मतलब होता है अब, और अब का मतलब होता है क्या करने वाले हैं इस वक्त. now का मतलब अब और अब का मतलब होता है इस वक्त, और इस वक्त का मतलब होता है कि x और y, ये x कोऑर्डिनेट x एक्सिस है और ये है y एक्सिस. यहाँ पर हम कितने लेंगे पॉइंट? हमारा बिफोर रोटेशन जो हमारा ट्राइंगल था ABC, let us say this is A, let us see this is B and let us see this is C. इसको हमने तो हमारा A हमारा कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 and 6. This is 2 and 1 2 3 4 5 and 6. 1 2 3 4 5 6. इस तरह से इक्वालिटी बना लेते हैं. 5 6 8 तक जाएगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पर कर लेते हैं कहाँ आएगा वो थोड़ा सा अंदाजी से कर जो. तो दिस इज 2 and before rotation 2 and then B is this is 2 comma 2. ये पॉइंट हमारा 2 comma 2 है और एक हमारा 8 comma 2 है. सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और कॉमा 2 है. एक हमारा 8 कॉमा
This is point, let us say this is B 8,2 और C हमारा पॉइंट है 5,5 1 2 3 4 5 5,1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 is here. This is point A, this is B and this is C, that is 5,5. ये हमारा रोटेशन के पहले का ट्राइंगल है. जब हमने वो रोटेशन and triangle is given by coordinate, this one rotate by angle 90, here it is 90 degree. जब इसको 90 डिग्री से करा तो हमने a dash आया, a dash हमारा -2,2 आया. So a dash this is -2 and 2 यहीं पर आएगा ना. This is a dash हमारा आ जाएगा -2,2 and then this is b dash -2,8. -2,8 का मतलब इस पे यहाँ सपोज यहाँ पर 8 आ रहा है. सो -2 दिस इज -2,8 इस तरह से. सो दिस इज बी डैश. क्लियर हो गया ना. और सी डैश हमारा आ रहा है सी डैश -5,5 1 2 3 4 5. दिस इज -5 and 5 is here 1 2 3 4 5. This is 5. So this is C dash. This is C dash and this is -5,5. This is the after rotation. So ये हमारा रोटेशन के बाद का होगा.